फॉरेस्ट होएगा, रेन फॉरेस्ट होएगा तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ओनली ट्रीज एंड नो ग्रास, है ना, देयर विल बी ओनली ट्रीज एंड नो ग्रास. एंड इन केस ऑफ ट्रॉपिकल मॉनसून देयर विल बी ट्रीज एज वेल एज ग्रास, बट द ट्रीज विल बी मोर इन नंबर एज कंपेयर टू ग्रास. इज इट और नॉट? समझ आ गया चीज? तो देखो, अगर मैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट द डायग्राम बनावा तो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस, something like this, something like this. So there will be dense canopy and there will be no grass, there will be no grass. But अगर मैं monsoonal climate का diagram बनावा तो की होएगा, trees will be there but they will have spacing now, they will have spacing, and because of the spacing the sunlight will penetrate at the bottom, and because of that reason there will be some amount of grass that will start coming up. Is it absolutely clear? So it is like stage by stage transition हो रहा है. So rainforest trees will be very high in size, they will be larger in size, but in case of marine the trees will become smaller in size, and there will be also some amount of grass. Now in savanna what happens, rainfall drastically reduces. ठीक है, we'll read that savannas are those areas जिथे rainfall is drastically getting reduced. Because drastically reduce हो रहा है, so you will get what? Grass. So grass will be in majority, है ना, because rainfall काफी ज़्यादा drastically reduce हो चुके हैं, and at some points you will also get trees, grass, trees. So in savanna what will happen? There will be much of grass, less of trees. Clarity है? Why? Because rainfall has been drastically reduced. When you come to steppe, the rainfall is so drastically reduced that there will be only grass and no tree. So there will be no tree in steppe, you will not find one single tree in steppes, you will only find what? Grass. And lastly, when there will be rainfall so drastically reduced that there will be no grass, only shrubs, है ना, and plants like cactus and etc. you will get this, and that also will be sparsely located. So as you are moving from one region to another region, the rainfall is decreasing, and because of decrease in the rainfall, what you are registering is the change in the vegetation. So here equatorial rainfall, very heavy rainfall, so there will be only trees and no grass, and trees will be very taller, and hardwood. In monsoonal climate you have this rainforest, there will be another thing, that the trees the key, there will be trees, they will be taller, they will be hardwood, and they will be evergreen, right? They will be evergreen. Why? Because the entire year registers rainfall, so there is no time जो कि आपने है ना, basically the time when the trees will shed their leaves, because there is no such time जिथे rainfall नहीं मिल रही उन्होंने. On the other hand, when you come to tropical monsoon climate, the trees will be what? Trees will be smaller, hardwood will get registered into softwood, and lastly trees will be deciduous. So trees will be deciduous. Why? Because now there is some portion of the year where there is no rainfall. So in that portion of the year, the trees will try to adapt, and the trees will try to adapt, and thus they will register what is called shedding of the leaves. And the trees which shed their leaves in some part of the year are called deciduous, and the trees which don't shed their leaves all year long, they are called evergreen. Tropical monsoonal, the equatorial rainforest के बाद savanna आ गया. In savanna what happens now, because of the less rainfall, so trees will not be able to be there, है ना, so there will be grasses, but there will be, yes, definitely trees which will be like one or two tree the entire savanna. And lastly you will have steppe, which will be like totally grass, so there will be not like, है ना, trees at all you will find. And desert, there will be no grass, there will be only shrubs, है ना, that's very important. Now in savanna and steppe, the major difference is what? Number one, there will be trees that you will find in savanna. Trees are not missing altogether, but in steppe there will be no tree. And secondly, what you will find in savanna is the grass will be taller. So grasses क्या होंगे? Taller as compared to steppe where the grasses will be shorter. Very very important. Steppe में smaller और savanna में taller. Why? Because savanna में थोड़ी ज़्यादा rainfall हो रही है. तो आपको ये कंसेप्ट ऐसे चला के चल रहा है, बिकॉज सवाना में ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, इसलिए सवाना में जो ग्रासेस होंगे वो टॉलर होंगे. एंड समटाइम्स दीज ग्रासेस आल्सो कॉल्ड एलिफेंट ग्रासेस. यू रिमेंबर
And we saw this in the video, and where we said that elephant, they generally escape in these grasses. They are so tall, so they are called elephant grasses in savanna. But in steppe, the grasses will be like not elephant grasses, but they will be shorter in size, shorter in length, shorter in height. So you can imagine that there is a grassland, and where these buffaloes are eating something. That entire thing is steppe. Okay? And savanna is something where zebra and all these animals they live. And lastly, you will have deserts where there will be no grass, and at few places you will find shrubs and plants like cactus which have the potential to adapt to xerophytic conditions. So xerophytic condition means the conditions where there is lack of water. So simple, and that's how you organize these 5 important climatic regions. Then there are 2 climatic regions which are on the basis of temperature. There are 2 climatic regions which are based on temperature. Now these 2, taiga and tundra, they are located above 60 degree north and 60 degree south. So taiga is roughly from 60 degree north to 70 degree north, and tundra is roughly from 70 degree north to 80 degree north, and similarly applies for south as well. So when I start trying to classify things on the basis of temperature, I classify on the like tundra and taiga. So taiga is something which is between 60 degree north to 70 degree north, and tundra is between 70 degree north to 80 degree north. And today we will see this interesting video of taiga forest. तो आर प्लैनेट में जो रह गया है ना, दो इंपॉर्टेंट वीडियोस रह चुके हैं, उसमें एक वीडियो है टाइगा फॉरेस्ट की, तो 45 मिनट्स की उसको कंप्लीट करेंगे एंड विल सी कि वो उस एरिया में क्या फ्लोरा है, क्या फौना है, एटसेट्रा. Taiga forest we'll see today, and then you have tundra. So taiga forests are very famous for coniferous. So you must have heard about this word called coniferous. Coniferous trees ਲਈ बहुत famous है taiga forest. Coniferous trees are those trees जिन्हां ਦੇ leaves conical ਹੁੰਦੇ ਆ. So leaves are conical. Conical मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ shape triangle ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So they are conical in shape. That's the reason why they are called coniferous. Are you clear on this? So taiga forests are known for that. The best example is the Christmas tree, which is conical in shape. And the reason is very simple, that these forests experience a lot of snowfall. And the snowfall, they are trying to adjust the snowfall, because if the tree will be broader, the snow will fall on the tree, and the snow will plug that leaf. So they try to make sure that they are cutting the edges of the leaf so that the snow can travel easily. So that is the basic reason why you have coniferous trees in this particular part of the world. And lastly, you have tundra, where the temperatures are so less that it is very difficult to find vegetation over there, but still vegetation is there. Okay, what you get is like moss and lichens. So not much vegetation you find in this part of the world, but yes, definitely there are few areas where you get some amount of vegetation, etc. So these are some of the important 7 regions. Very easy to understand. So 7 region मेरे नाल repeat करो सारे. The first region is Equatorial Rainforest. The second is tropical marine. The third is savanna. The fourth is steppe, and the fifth is desert. This classification is done on the basis of rainfall. Equatorial rainforest will have heaviest rainfall. Then the rainfall will be lesser, much lesser, and almost zero. Not zero you can say, but yes, evaporation is much higher than the precipitation. When the rainfall is much higher, the trees will be taller. The trees will be hardwood. The trees will be evergreen. Clear hai? When the rainfall becomes lesser, you will find trees, no doubt about it, but here canopy will become less dense. Here canopy will become more dense, because the less dense canopy, the grasses will start coming up, so there will be more grass. Secondly, the trees will be not evergreen but deciduous. Why? Because tropical monsoon climate registers rainfall in some part of the year, not all year long. Only in the month of August, September, October, like in India, 3 months of rainfall, and rest of the months dry. So they register in a dry periods, and in those dry periods the trees shed their leaves. Then in savanna what happens is much lesser rainfall, which results into what? Grasses but less trees. So trees are available in savanna, they are not absent, but definitely the most prominent feature of savanna is a grass. Clear hai?
In steppe, the rainfall still reduces further, which results into what? No tree at all, and the grasses also become shorter. Here the grasses are elephant grasses. They are big in their size. Why? Because there is rainfall, but rainfall is not so high that you can find trees. Are you getting the point? And then lastly, you find no rainfall at all, and you know, at some places you will find some scrubs and shrubs, something like that. So that's very important. And shrubs you will find, etc., in desert. Lastly, on the base of temperature, you have two important regions, tundra and taiga. Tundra is where the temperatures have become very, very less. Taiga is still 60 degree, where the temperatures are not very less. Now in taiga, the very famous kind of trees are called coniferous. Now taiga, if you see 60 degree north registers what? Frontal rainfall, if you remember, we have done this. So 60 degree north registers frontal rainfall. So, and I told you when we did frontal rainfall that frontal rainfall happens all year long. So in every month it starts, the temperate cyclone begins, and finally after 15-20 days it dies. So every month there's a front that is getting formed. If every month there is rainfall on 60 degree north, what kind of trees you will get? Deciduous or evergreen? Evergreen, right? Every month there is rainfall happening. So what kind of trees you will get, Balvinder? Deciduous or evergreen? Evergreen. So taiga rainforests are characterized not just by coniferous but evergreen. Very interesting. Now evergreen trees you are getting at two locations. One you are getting at equator, another you are getting at taiga. Clear? You are clear about it? Evergreen you are getting at two locations, one at equator, another at taiga. The reason is different. At equator the reason is convectional rainfall, at equator the reason is frontal rainfall. Clear hai? Convectional rainfall is much heavier than frontal rainfall. Please understand this. Convectional rainfall is much heavier than frontal rainfall. Thus, the rainforest that you get at equator is much more dense, the trees are much more higher, the canopy is much more thick, and you get hardwood. On the other hand, at 60 degree north, because the rainfall is lesser, it is constant across here, but it is still lesser. You get shorter trees, you get coniferous plants, you get soft wood, and you definitely don't get thick canopy. Right? So there will be grasses here. Is it or not? Are you clear on this or not? So there's a difference between the evergreen trees you get at equator and the evergreen trees you get at 60 degree taiga. What is the basic difference? The basic difference is the amount of rainfall. The amount of rainfall you get at equator is much higher than the amount of rainfall you get at 60 degree north taiga. You get rainfall all year long at equator, you get rainfall all year long at taiga, which means 60 degree north. But the amount is lesser at 60 degree north as compared to amount which you get at equator. The reason is very simple. Here you get frontal, here you get convectional. And convectional rainfall is always higher than the frontal rainfall. Is it absolutely clear or not? Because of this reason, the evergreen trees that you find here is different from evergreen trees that you find at 60 degree north. Here the evergreen trees are not deciduous. Here the evergreen trees are, not coniferous. Here the evergreen trees are coniferous. Here the evergreen trees will have thick canopy. Here the evergreen trees will have thin canopy. Here the evergreen trees will have hardwood. Here the evergreen trees will have softwood. So that's a very major difference. And that summarizes your entire climatic regions. कोई शक? सिंपल है, ठीक है. तो कल ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ. ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ. तो let's start with your tropical, monsoonal or marine climate. टुंड्रा टाइगा. कन्वेंशनल रेनफॉल है, उसकी रेंज कन्वेक्शनल उसकी रेंज लो होगी. कन्वेक्शनल रेनफॉल हमेशा बहुत ज़्यादा रेनफॉल क्रिएट करेगा, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड फ्रंटल नालों ज़्यादा करेगा, ताई उत्थे ट्रीज टॉलर होंगे एज कंपेयर टू फ्रंटल. 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर इफ यू रिमेंबर फ्रंटल रेनफॉल होंगी है. We have done this because there is a warm and a cold air mass meeting,
and because the meeting, the cold air mass will remain at the ground and the warm air mass will rise. The rising of the warm air mass will create low pressure. This low pressure will suck in the winds from all the directions, creating a temperate cyclone. This temperate cyclone result into clouds, and clouds will go for rainfall. This is what we've done when we have covered frontal rainfall. Now frontal rainfall happens across year. ठीक है, it is not bound to one particular season. So every month there is a front formation happening at 60 degree north, and because of the formation of the front, rainfall हो रही है वहाँ पे. तो ये पूरा साल चलेगी, यानी कि 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बारिश जो है वो सारा साल मिलती है. जब बारिश आपको सारा साल मिल रही है तो अडेप्टेशन क्या होगा प्लांट का, डेसिडुअस या एवरग्रीन? एवरग्रीन. तो एक चीज तो कंसेप्ट समझ आ गया ना कि टाइगा के ऊपर आपको फॉरेस्ट मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि सारा साल बारिश हो रही है, और वो फॉरेस्ट के में जो ट्रीज होंगे उनका नेचर क्या होगा, एवरग्रीन होंगे वो, है ना, डेसिडुअस नहीं होंगे. और थर्डली ठंड बहुत ज़्यादा होगी, और सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे बिकॉज ऑफ द लेस टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन विल अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, क्योंकि टेम्परेचर कम है वहाँ पे. तो जो भी क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, फ्रंटल रेनफॉल जो भी होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा होगा कि आपकी जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नो की फॉर्म में हो रही है. क्योंकि वो स्नो की फॉर्म में हो रही है तो जो लीफ होगा, अगर लीफ की अडेप्टेशन ऐसी है और लीफ की अडेप्टेशन ऐसी है, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेटर अडेप्ट करेगा, ये वाला लीफ या ये वाला लीफ? क्यों? क्योंकि ये वाला लीफ तो टूट जाएगा, जैसे ही स्नो उसके ऊपर गिरेगी तो ये ब्रेक कर जाएगा. तो ट्री विल मेक श्योर कि वो ऐसा लीफ बनाए जो इस पर्टिकुलर स्नो को एक रास्ता दे जाने के लिए. तो अगर वो लीफ कोनिकल इन शेप होगा तो जैसे ही वो स्नो गिरेगी तो उसको रास्ता मिल जाएगा, वो चला जाएगा. तो इस वजह से जो भी लीफ होगा वो क्या शेप होगा उसका, कोनिकल. और कोनिकल एवरग्रीन ट्रीज को बोलते हैं कॉनिफेरस. कोई शक इसमें? सिंपल है, कोई डाउट? ये पूरा 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो आपको फॉरेस्ट मिलता है, चाहे वो साइबेरिया का फॉरेस्ट है, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फॉरेस्ट है, चाहे वो आइसलैंड में फॉरेस्ट है, चाहे वो कनाडा का ऊपर वाला एरिया पूरा फॉरेस्ट है जहाँ पे पंजाबी नहीं जाते, है ना. तो वो सारा जो एरिया है जहाँ पे ये सारा फॉरेस्ट है, ये सारा फॉरेस्ट कैरेक्टराइज किया जाता है बाय कॉनिफेरस ट्रीज. इज इट क्लियर और नॉट? अब ये कॉनिफेरस ट्रीज एवरग्रीन होंगे, राइट. ये एवरग्रीन होंगे. क्यों एवरग्रीन होंगे मैं बता चुका हूँ. लेकिन ये ट्रीज एवरग्रीन है और इक्वेटर पे जो ट्रीज है वो भी एवरग्रीन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक तो इक्वेटर के ऊपर बारिश के साथ साथ गर्मी भी ज़्यादा है, वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिल रही है. ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे बारिश के साथ साथ सर्दी है, तो एक तो ये डिफरेंस क्रिएट करेगा. सेकेंडली कन्वेक्शनल रेनफॉल ज़्यादा हैवी होती है एज कम्पेयर टू फ्रंटल रेनफॉल. तो मैं ये नहीं बोल रहा कि एवरेज रेनफॉल विल बी इक्वल इन ऑल मंथ्स, ये दोनों जगह होगा, लेकिन एवरेज रेनफॉल जो इक्वेटर पे होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एवरेज रेनफॉल जो 60 डिग्री पे हो रही है. तो रेनफॉल भी ज़्यादा कम रजिस्टर हो रही है और ठंड भी ज़्यादा है. तो ये दोनों फैक्टर्स इसकी एवरग्रीन नेचर को बदल देंगे एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग एट इक्वेटर. कोई शक इस चीज़ में? बहुत सिंपल है. तो ये क्या चीज़ चेंजेस लेके आएंगे? नंबर वन, एक तो इनका जो वुड होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, हार्ड वुड नहीं रहेगा, अनलाइक द इक्वेटर वेयर यू आर गेटिंग हार्ड वुड. सेकंड, इनकी कैनोपी डेंस नहीं होगी. कभी आपने क्रिसमस ट्री देखा है? तो क्रिसमस ट्री की कैनोपी डेंस नहीं होती, है ना. आप बात समझ रहे हो ना? डेंस मतलब जैसे आप लगा के चलो रोज वुड, है ना, ये बहुत मतलब डेंस ट्री है, लेकिन क्रिसमस ट्री डेंस नहीं होगा, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी. तो ये जो दूसरा पॉइंट है कि क्रिसमस ट्री जैसे दूसरा पॉइंट है कि इनकी कैनोपी डेंस नहीं होगी, तो थोड़ी बहुत ग्रासेस देखने को मिलेंगी, सॉफ्ट वुड होगा. ऑन द अदर हैंड हार्ड वुड, डेंस कैनोपी. ये बेसिक डिफरेंस होगा एट 60 डिग्री नॉर्थ आएगा एंड 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर. तो बहुत ईजी है, ठीक है, क्लियर है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर इंडिविजुअल. चलते हैं हम एक एक करके लेते हैं, है ना. कौन कौन सा हो गया अपना? मरीन क्लाइमेट एंड मॉनसून क्लाइमेट करते हैं. कुछ और डाउट? अच्छा, टुंड्रा का पूछा है. तो टाइगर के ऊपर क्या है? टुंड्रा है ना. अब टुंड्रा में क्या है, जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपको बारिश नहीं मिल रही, अब यू आर नॉट गेटिंग रेनफॉल एनी मोर एंड द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. तो ऊपर जैसे जा रहे हो तो एक तो रेनफॉल बिल्कुल ही डाउन चली गई, और ऊपर से ना टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है. ये दोनों कंडीशंस के बारिश भी नहीं है और सेकेंडली टेम्परेचर भी बहुत कम हो चुका है. दीज टू कंडीशंस आर नॉट गुड कंडीशंस फॉर वेजिटेशन टू अकर.
आप समझ रहे हो, है ना। प्लांट की अक्रेंस के लिए ये दोनों कंडीशंस नहीं सही, लेकिन मदर अर्थ इतना ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स बना रखे हैं कि कुछ यहाँ पे भी आपको प्लांट्स मिलेंगे। ऐसा मतलब पूरी दुनिया में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे आपको फ्लोरा फौना नहीं मिलेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मदर अर्थ। तो अडेप्टेशन के तरीके डिफरेंट प्लांट्स ने क्रिएट किए हुए हैं, इवन फौना ने भी क्रिएट किए हुए हैं। अब आप टुंड्रा पे जाओगे तो आपको पोलर बियर मिलेगा, आपको, है ना, वो सब क्या है, वो उसका जो सील्स मिलेंगे आपको, बड़े अच्छे पेंगुइन्स एंड ये सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इनकी बॉडी ने किसी तरीके से अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स डेवलप कर रखे हैं। तो टुंड्रा पे वेजिटेशन नहीं मिलेगा ये कहना गलत होगा, टुंड्रा में लेस वेजिटेशन मिलेगा ये कहना सही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनफैक्ट टुंड्रा में मिनिमम वेजिटेशन मिलेगा। अब वो मिनिमम वेजिटेशन में ट्रीज होंगे, टुंड्रा में ट्रीज होंगे नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे। बट हाँ, जैसे जैसे हम टाइगा की तरफ आएंगे तो ट्रीज मिल जाएंगे आपको, जैसे जैसे टाइगा से दूर जाएंगे तो ट्रीज हमें मिलने बंद हो जाएंगे। सिंपल है। टुंड्रा में आपके ट्रीज नहीं होंगे, टुंड्रा में आपकी ग्रासेस होंगी नहीं होंगी, है ना, ग्रासेस भी नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, जैसे ही टुंड्रा में गर्मी आएगी, जैसे मैंने बोला था ना, इफ़ यू रिमेंबर, जब स्टार्ट किया था हमने तो हमने बात की थी कि 6 महीने टुंड्रा में सूरज रहता है और 6 मंथ्स जो है वो रात रहती है। जैसे ही सूरज आना शुरू होएगा तो बर्फ़ मेल्ट होगी और उसकी वजह से क्या होगा, कुछ जो सॉइल जब जैसे ही एक्सपोज होगा सनलाइट को तो वो हल्की फुल्की कोई ना कोई वेजिटेशन बाहर आएगी। तो टुंड्रा में जो है वो वेजिटेशन आने का यही रीज़न है कि जब 6 मंथ्स वहाँ पे सनलाइट आती है तो तब वेजिटेशन बाहर निकलती है। तो टुंड्रा में जो वेजिटेशन होगी वो मोर और लेस मॉसेस और लिचन्स की होगी। तो मॉसेस आपने देखा होगा कि वो जो घर के बाहर ग्रास नहीं आ जाती है ना, अनवांटेड ग्रास, वीड जिसको बोल देते हैं, तो वो कुछ हो गया। लिचन जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो वो एक कंसेप्ट सा थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिक टुंड्रा में वेजिटेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। आप क्लियर है? तो ये सारे अपने आगे है ना 7-8 जितने भी हैगे वेजिटेशन जोन्स, तो इन्हों आए याद रखना है। तो मैंने पैटर्न बना दिया आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो ये स्कूल ना तुसी पढ़िया भी होगा कदे ना कदे, है ना, सुने ये सवाना कदे। मैं जो पढ़ता सीगा मैंने हमेशा सब तो डिफिकल्ट पार्ट लगता सी ये जोग्राफी का, नहीं लगता सीगा। तुसी पढ़िया वरिंदर ये स्कूल नहीं? किसी किने पढ़िया है स्कूल दे विच? हैं किने पढ़िया?